Today we will be discussing on that parental property wala chart which Rachna ji had given. I also was thinking that we will discuss that wristwatch wala case. That is also interesting case. And then those timing ka two cases I will share with you how गुड I am इवनिंग doing मनीष it. जी। Namaste, namaste, hello. So नमस्ते वो सभी को। timing का case का दो cases discuss कर देते हैं. And what I would suggest is it is all at an experimental stage because nobody has given that technique. So you all also work on it, and the more experiments we do, we'll be able to zero down. Okay. So should we Yeah, start? once I know the technique, I'll do the experiments on it. कोई भी courier कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, बच्चे बाहर गए तो कभी आ रहे हैं, everything we can find out. Okay. Yeah. Should I start the sharing the screen? किसको कुछ और बोलना है? नहीं ना? No. Okay. So this was that first project which we had discussed. बराबर? ये रचना जी का ये था. So I'll just. मनीष जी आपका वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या कुछ थोड़ा? अरे मैंने अभी बढ़ाया था वापस छोटा हो गया. One minute, let me just see. वैसे after 30 years of marriage आवाज तो ऐसे निकलता ही नहीं जाता था. अभी ठीक है? हाँ थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ. हाँ अभी शायद अभी it must be better now. हाँ इम्प्रूव. Okay, after 30 years of marriage आवाज normally वैसे निकलता ही नहीं. Okay, चलो ये हो गया. हाँ चलो. So basically this case was where is the name here? Will the parental property dispute be in our favor in 2022? Correct. This was the case which we discussed. So this chart you all know. I'll just explain the analysis. What this thing? The Karak planet in this thing is Mars. So Mars is in the Udayam. So at first point only it is confirmed that it is a property related case. Mars has a connect of 2, 3 and 7. What I mean by that is Mars is seated in the second house. Mars rules the second house. Okay. Mars transit is seated in the third house and Mars rules the seventh house. So 2, 3, 7. So 2 is family, 3 is documentation and 7th is opposite party. वहाँ भी Mars बैठा है. Yani it could be brother. So which you said is cousin. So this was the first line of verification. Second line of verification was 8th Lord. ये जो 8th Lord Venus है, that happens to be the Udayam Lord also. Okay. So that connection between parental property 8th this thing and Udayam Lord वो एक connection आ गया. Okay. And Karak planet Mercury, okay, is approaching Arudam. Karak planet Mercury because it is documentation. So Mercury approaching Arudam. ये और एक confirmation है. Like I do a lot of confirmation. तो नहीं तो एक दो में okay हो जाता है. But now Kavipu is catching Mercury. If you see this, Kavipu is catching Mercury. So Karak planet को वो पकड़ रहा है in the 11th house of gains. The 11th house है. So Kavipu 12 में से आके 11 में Mercury को पकड़ रहा है in the house of gains. Then Jupiter is in 12th. So Jupiter is in the 12th house and is ruling the 3rd house and the 6th house. Correct. So 3rd house is the house of documentation. 6th house is the house of actually 6th house से ननिहाल भी देखते हैं. Is it a grandfather का property sort of thing, रचना जी? Yes, yes. तो 6th house से ननिहाल भी देखा जाता है वैसे. So you can consider that also. But also it is also the 6th house is also the house of obstacles in a way. Very good thing. ये वाला था ना. Yeah. So 12 and 6. So 6th is also Nanial, but it is that, and also it is the loss of the opposite party. Yeah, but we cannot consider that. Okay. Then Jupiter. यहाँ पर अपने जुपिटर को क्यों पकड़ा? जुपिटर के क्यों पकड़ा? Because Jupiter is a Udayam Lord का नक्षत्र Lord है. ये उदयम का जो नक्षत्र Lord है वो Jupiter है. Okay. Okay. And Jupiter is the ruler of 3rd house and 6th house. Plus वो कविपुर के साथ भी बैठे हैं. Plus Jupiter is also in a way बाप दादा जैसे बोलते हैं, grandfather, that sort of thing. So ये line अगर ancestor, हाँ. तो Jupiter अगर देखो तो Jupiter is उदयम का नक्षत्र Lord भी है.
सो वो भी जुपिटर का उदयम के साथ कनेक्शन लग गया, ये जुपिटर का उदयम के साथ कनेक्शन लग गया. ओके, मर्क्यूरी इज द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ आरुडम. इफ यू सी आरुडम, उसका नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी है. ओके, सो आरुडम और उदयम ये दोनों का कारक प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन लग गया है. ओके, नाउ कविपु नहीं सॉरी, हाँ, एंड सन दैट इज गवर्नमेंट इज द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ कविपु. सो अगर ये लाइन में जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो अगर देखें ना, तो उदयम, आरुडम एंड कविपु थ्रू द नक्षत्र लॉर्ड्स आर कनेक्टेड टू द कारक प्लैनेट्स. Okay, ठीक है. that is one thing. Then Saturn in the Udayam Lordship house. So ये Udayam Lordship house है, उसमें Saturn बैठे हैं. Okay, that also shows old property. And one point which I had not written here is basically it also shows delay or denial in a way, because ये है और राहु है. Okay, so Rahu is also in a way grandfather का thing ऐसे बोल सकते हैं, but Rahu is also उसको ये disruptor बोलते हैं ना, it spoils everything. So basically Saturn and Rahu both seated in the Udayam ka co-owned house, and again the 8th house of parental property. तो एक वो इससे भी मालूम पड़ता है कि ये old property है. Anyways, Yes. so Saturn in Udayam Lordship house, old property or house, and Kavipu in the 12th house of investment in, that is property. 12th house is also considered as an investment, no, big investment. Yes. So वहां पर कविपु ये बैठे हैं. ओके, और ये जुपिटर है. सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. तो यहाँ तक अपना वेरिफिकेशन भी हो गया और एक्चुअली एनालिसिस भी हो गया. सो हियर आई हैव रिटन दैट अबव आई हैव रिटन ओनली फॉर स्टडी पर्पस. द केस इज प्रीटी क्लियर बिकॉज़ कविपु इन 12 कैचिंग मर्क्यूरी, कविपु इन 12 कैचिंग मर्क्यूरी व्हिच इज डॉक्यूमेंटेशन. ओके, इन द हाउस ऑफ गेन्स. ओके, एंड कविपु legal case is also, it's a drain. Kavipu is like a drain. अरे कविपु क्या बोला, केतु is also a drain. ये जो केतु है in the second house of profit. I'll explain some slightly confusing. ये मैंने by mistake कविपु लिखा था, I also got confused. This is supposed to be केतु. तो केतु is also in some way a कारक of legal. Ketu is also a drain, and second house में बैठा है, which is a house of profit. Okay, so that is another thing. दूसरा क्या है, ये जो कविपु है, it is catching the कारक planet Mercury in the 5th house of Sun. So 5th house of Sun you can consider it as government, or you can also consider it as ancestors, father हो जाता है, बराबर. Yes. And Kavipu in Mercury house of documentation. ये Kavipu भी बैठा है, ये Mercury के house में बैठा है. So all this does not link positively, and about winning the case, it doesn't show very great prospects. Yeah, this is true because जो 10 कजन है वो पूरे भारत में है बिखरे हुए. बड़ी मुश्किल तो इकट्ठे होते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो लड़ लुड़ के सब अलग हो जाते हैं, फिर कोई कहीं कंक्लूजन नहीं हो पाता. One more point, sorry, मेरे को अभी दिख रहा है, ये जो 10th lord है, because you have to see the 10th house also. So 10th lord कौन है, मून है. मून जो बैठा है, दोनों मून यहाँ पर ही बैठे हैं in the 6th house of litigation. So Arudam का lord is also weak. So if you study the first point on which I said कि Venus मतलब उदयम lord, it is ruling 8th house. बराबर, it is seated with Rahu. Yes. Okay, and again the connection with the third house. So this is what it is. Should we go to the next one? Yeah. Anyone has anything to say over here? All okay? No, very nicely done. Okay. Now the next case is this wristwatch thing. Okay, this was an interesting one. The पूरा हमारा study matter सब निकाल दिया. Okay. So now, actually, it is quite obvious. The problem is, to select the thing, there are so many combinations which keep coming up. Anyway, so basically moon in Udayam. Okay, so moon approaching Udayam, that is the first thing. So moon is indication of loss. Mercury is the Mercury in the Udayam is the Udayam Lord. Mercury is the Udayam Lord. Mercury stands for watch.
correct? Moon approaching Udayam, Venus approaching Arudam, both are karaks of silver. So if you put all these together, it shows loss of a silver watch. Loss plus silver watch, ये silver silver. Okay, so वैसे पकड़ सकते. So there are so many permutation combinations which said which are all correct actually. So what I feel is, these permutation combinations which you get now, the person who has put up the case should cross check with them and find out how much of them is correct, because then the complete, it will open up like a D1 chart, a temporary D1 chart. Here I have written Udayam Lord Mercury is retrograde in the 8th house. Also the 10th Lord Jupiter, 10th Lord Jupiter, okay, is in 8th. So basically the सूत्र ऐसे है कि Udayam Lord in 8th or Arudam Lord in the 8th or the Karak planet or the Karak Bhav related to 8th, that shows loss or something which is some loss. 8th house is house of loss. So any Obstacle. obstacle है ही है, पर इधर तो loss है. So we are verifying that. So verification के लिए अगर देखें तो 8th house is a house of loss, जैसे पकड़ा जाता है. Yeah, and क्या बोल रहा था? Even it's a loss of life also. No? Death is also seen from 8th. Yeah. So ये सब है. So all these connection with the 8th house are saying that, and 8th house whenever it connects to Saturn, okay, यहाँ तक ये देखो, 8th house when it connects to Saturn, it shows some bitterness in the loss. कुछ तो भी bitterness की वजह से हुआ है. Here, Saturn is the lord of the 8th house. 8th house का lord Saturn. So 8th house का और Saturn का directly connection हो गया as in the Rashi lord. So some bitterness. अभी ये किसने किया, ज्ञान जी ने दिया था. He will only have to tell what was the bitterness in that. हाँ नहीं sorry, so वो है ना, वो I have written here. वो उसका divorce हुआ और father mother के पास गई, वो time हुआ. Correct. अच्छा. Then I'll tell you, I have written it here. ये red वाला I will explain. दूसरा एक ध्यान में रखना है, यहाँ जुपिटर डेबिलिटेटेड है, यानी यू कैन से इन फादर या व्हाटएवर इज डेबिलिटेटेड, व्हाटएवर. ओके, नाउ these were the checks which I had said, so I'm not reading out that, I'm just reading out what feedback we had got here. So here she had said that she and her mother have leg related pain. So this we had seen from Udayam Lord Mercury in 148. So ये Udayam Lord जो Mercury है, उसका this, it is ruling this one, बराबर. It is in 1, it is ruling 4, and it is seated here. Correct? Retro. 148 and also 6. I forgot to write 6 over. So 148. So 1 is self. Okay, 4 is mother. 6 is illness, and 8 is again bigger illness. So this I had said here, any health related issues to mother or similar. ये कोई मासी किसी को. So that he had said that she and her mother have got leg related problems. और वो leg का भी मैंने leg का भी निकाला था, but I had not told him. See this कालपुरुष कुंडली से this becomes the 10th house. 10th house is also the leg, upper leg, thigh से लेके knee तक will be considered more or less in the 10th house, mostly the knees. But that I had not told him. I just said leg, but I had seen this. So वो अभी उनको पूछना कि leg का किधर था. Anyways. Then next point over here was the financial loss was anticipated because Moon was in the 2nd house connected to them, and Rahu was in the 12th house. So Rahu you can consider as something which is unknown. So share market can be this thing. 12th house is also the house of investment in a way. Snake is the house of confusion. So Rahu and Snake together, I thought would look something like stock market. Plus in the house of Venus, Lakshmi, पैसे का, जहाँ पर राहु पूरा confusion कर रहा है, and Moon is in the 2nd house. So ये दोनों का पकड़ के, I anticipated that there could be some loss in the share market. Okay, and Venus is also coming here, but he has not yet confirmed that, so I am not talking much on that. Then we had said here status of husband's career at this point. So some husband related problem दिख रहा था. I think I should change the color. So ये जो है, so husband related issue we had said was confirmed divorce. This tells because Venus is in Arudam in the 12th house. So ये जो Venus Venus in Arudam.
ये रहा। हाँ तो हाँ सॉरी Venus related Venus owned this thing. Venus is connected with Arudam, ये एक point हो गया, and it also is ruling the 12th house. Correct. So Venus is in Arudam is one point. It is also in the 12th house at Sun side. It is with Rahu is another thing, and it is with Snake, and it is also the 7th house का Lord, and Jupiter is debilitated in the 8th house. So if you see all this, basically Venus is connected to Arudam एक हुआ. Okay. Venus also rules the 12th house एक हो गया. Venus is with Rahu and Snake in the 12th house, वो भी हो गया. Venus is seated in the 7th house, वो भी हो गया. वो Mars के साथ भी बैठे, वो मैंने नहीं लिखा था, ये भी इधर है. And Jupiter is in the 8th house and debilitated. That is the 7th lord. So 7th lord Jupiter is debilitated and seated in the 8th house of separation. Actually, that is the most important point. Jupiter, Yes. which is the 7th house lord, is seated debilitated in the 8th house of separation. So 7th house का connection 8 से हो गया उसका. 7th का connection 8 से हो गया. Okay. So this shows the marriage thing at one point. Then next I have written that the parental issue was seen from Jupiter with Ketu, with Kavipu, and Kavipu catching Jupiter. So Jupiter कहाँ Kavipu कहाँ गया? So Jupiter के साथ Kavipu बैठे हैं यहाँ पर, और Kavipu Jupiter को भी पकड़ रहा है. Okay, so that was showing this thing. So this can be related to the fact that she lost the watch while moving to the father's house, Jupiter, Saturn house. Okay, and may have written the bitterness is obvious because वो सब divorce में जो के house में shift करने तो obviously bitterness तो आएगा. Correct. And here also if you see Udayam का नक्षत्र लॉर्ड राहु है, Arudam का नक्षत्र लॉर्ड राहु है, Kavipu का नक्षत्र लॉर्ड राहु है. So Rahu is again a disruptor plus some sort of a confusion. Snake, maybe snake भी उसके साथ ही बैठे. तो snake, Rahu is धुआं, snake is again crisis. ठीक है? तीनों Should I go ahead? Next one, कुछ पूछना है यहाँ पे? Yeah. Okay. Now, next one are those two ये cases. What is it called? Timing का case. अभी ये जरा थोड़ा सा समझ लो because I am also experimenting on it, so you'll have to forgive me if I'm wrong somewhere. कैसे मैं calculate करता हूँ मैं बताता हूँ. I catch the Jama moon and I catch the transit moon and I catch their degrees. Okay. So वो analysis में clear cut लिखा था मैंने. Transit moon is at 335. Okay, that is 330 plus 5 again. 330 to 360. Jama moon is in 189. इन दोनों का difference is 146. 146 I divide by 21, which is the strength of the Rashi, strength of moon. Rays. हाँ. तो रश्मि बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? Whatever rays जो भी है. Rays. हाँ. So 146 divided by this gets 6.95. अभी at this point I think most people are not understanding, so I'll explain. यहाँ तक तो समझ में आया ना? This is very simple. तो ये जो 6.95, people have been in maths and all, they'll understand. 6.95 is what? 6 full and 95% of 6. Because once this 95 becomes 96, 97, 98, 99, 100 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा. Correct. So this 95 is 95% of 6. तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये 6 समझो निकाल दिया तो 0.95 ऑफ में उसका कितना परसेंटेज ऑफ 21 है. तो 0.95 into 21 करो ना तो you get 19.95, which I have rounded off to 20. ठीक है. Okay, so this is the slightly confusing part. If you have understood, this is good. Then what I've done is ये 6.95 है ना, ये 95 now gets converted to 20 ना, so it becomes 620. ठीक है. Okay, अभी ये एक सिर्फ ध्यान में रखना है 620. Okay, ये ध्यान में रखना है. Okay, so I have written ऐसे 62 मिनट पर वो ठीक है.
So if you calculate that, it comes to 21:42 का timing था estimated this thing. This was my wife का thing. Yesterday I had done that. इसलिए मैंने photo भी निकाल के रखा. Now the other क्या बोलते हैं उसे, rider sort of a thing I do parallel to it is JAMA What Moon. what Sorry? what is this 2040? Time at 2040. See, हाँ, at 2040, that was the time of analysis, 2040. ठीक है, And मेरे plus को 10 62 minutes मिला ना. हाँ 62 minutes में 1 hour 2 minutes हुआ ना. 1 hour 2 तो minute. अच्छा उसको ऐड कर, 2040 plus 0102 is 1 hour 2 minutes. ठीक है That comes to 21:42. ठीक है. So मैंने already पहले सब बना के रखा था कि कितने बजे आएगा. तो हाँ. 21:42 मुझे मिला. That was one option. ठीक So है. I do it by two methods. I tell you, in the next case you'll understand better maybe. दूसरा मैं क्या करता हूँ कि JAMA Moon to transit moon ये कितने राशि हाँ. है, बराबर ना? ठीक है. तो यहाँ से यहाँ अगर पकड़ लो तो this is 1 2 3 4 5 6 बराबर? हाँ. 6 राशि. तो 6 राशि directly you can either consider the 60 minutes or you can do that the typical way of 6 into this thing 126. So 126 अगर पकड़ लो तो it can be considered, it will be looked at as 1 hour 26, which becomes 2040 plus 01 this thing, which becomes 2206. Okay, this is the method which is written in the book. ये 6 into 21 ना normally वैसे ही करते ना. 6 into 21 is 126. So then 126 they consider as 1 hour 26 minutes. If you see in the book or whatever is taught, it's taught this way. वो मेरे को नहीं आ रहा था, it was coming wrong. So first method I did. Second method, ये दोनों के बीच में जो जितने राशि है उसका ही कुछ तो भी ये पकड़ लिया मैंने. And if you do it now, you realize if you do it this way, 6 राशि का वो भी आपको 60 minutes आ गए, which is 21:42. Sorry 21:40. And if you do it by the first method which I told you about, the minus deduction everything, वो भी आपको 62 minutes आया, which is 21:42. So and ये मैंने बट मनीष जी 10 जी आपने 102 कैसे लिखा है इसमें? 1 hour 2 minutes. 62 62 है ना, minutes. 62 में 60 becomes 1 hour ना, so 0 1 hour. 2 minutes is 02 ना. हाँ ओके 0 1 hour राइट. 21 से क्यों डिवाइड हुआ था? 146 को 21 से क्यों डिवाइड हुआ? राशि क्या उसको बोलते हैं, रे स्ट्रेंथ है ना मून का, चंद्र का जो रेस का वो टैबुलेशन है ना वो. ओके. मून का 21 इतना ही ध्यान में रखो, बाकी का वो सब है राशि किसी का सब है. मैं अब तक उधर पहुंचा ही नहीं, मैं इतना ही करके देख रहा हूँ. इससे अगर हो जाएगा तो बाकी सब गड़बड़ कर. मनीष जी फिर ये वाला ज्यादा सही आ रहा है ना, पहला वाला जो आपका वाला मेथड है. 2 मिनट का डिफरेंस, 2 मिनट 2 मिनट का डिफरेंस. nothing. If you can get it in the precision of 2 minutes में तो it कोई ज्यादा नहीं है. हाँ. See, when I did it by the conventional method, no, I was getting 20 to 60. That is all 20 to 06. That is 15-20 minutes ahead. 20 to 06 में कितना हुआ मुझे 10:06 हुआ ना. हाँ. बराबर ना. And she came at 9:42. तो ये तो बहुत इजी है ये वाला 6 into 20. नहीं पर इजी नहीं, ये दोनों ही करना पड़ता है. अच्छा ऐसे तो नेक्स्ट केस में बताऊंगा ना तो दोनों करना पड़ता है. आई टेल यू इट इज नॉट सो सिंपल. लगता है उतना सिंपल नहीं. आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड. सो वी आर ऑल इन द सेम बोट. इतना कुछ ये नहीं. ओके बट अगर ये दोनों आपको अगर समझ में आए ना तो देन आई विल गो टू द नेक्स्ट केस. कितने बजे आया था मनीष जी? एग्जैक्ट टाइम क्या था? ये क्या Arrived at 9:42 21:42 फोटो निकाला मैंने. ये मेरा स्क्रीन का है. ये जो दिख रहा है ना, दिस इज माय मोबाइल का स्क्रीन. कितने घंटे बाद में आए? कितने घंटे बाद आए? 20 बज के 62 minutes. कितना डिफरेंस था? 62 minutes. See, this is my screen. If you can see that, वो glare आ रहा होगा. ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है. इसका मैंने वो फोटो लिया. ये ऊपर का दिख रहा होगा आपको, जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है वो सब. शर्मा जी, it is 62 minutes का. I had done it at 20:40 hours. 1 घंटे बाद. And she came at 21:42. Which is 62 minutes हो गया ना वो.
See नहीं 20, आपने कैलकुलेट किया था टाइम कितना 20:42 21:42, और अराइव कितने बजे हुए 21:42. सेम। ओके ये देखो ना इधर I have taken a screenshot when she rang the bell and opened the door फट करके पहले before letting her in I took the screenshot. And सेम as per the conventional method it was coming 22:06 म्हणजे it is 15 minutes 18 minutes more. समझे शर्मा जी समझे आप? Have you understood what I have done? शर्मा जी did you understand? हाँ हाँ नहीं मैं एक चीज देख रहा था हम्म, आप जरा इसको ऐसे करके देखिए मून देखिए नीचे वाला कितना कहाँ पर है 7 1 2 3 4 5 6 एक, 7 दो, तीन 21 चार into 7 नहीं divided by 12 7 नहीं 6 7 कैसे ये 6 6 है ना अभी एरोस किया नहीं ना नहीं नहीं हाँ नहीं 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 हाँ यहाँ से चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 में मून पे आएगा तो 21 into 7 divided by 12 कितना होगा? सात पे कैसे आएगा 1 2 3 4 5 6 पे है ना जामा प्लैनेट तो ऐसे चलेगा ना जामा नहीं प्लैनेट नहीं तो वो सिर्फ उल्टा डिफरेंस चलेगा देख रहा हूँ मैं वो छोड़ ही दो आप हाँ सिर्फ हाँ नहीं नहीं I'm just- मैं एक दूसरा देख रहा हूँ कि 21 into 7 divided by 12 करते कितना आता है बाप रे कितना गणित आता है 21 into 7 divided by 12 एक मिनट 21 into 7 7 divided by 12 12.25 12.25 और 21 into 6 by 12 करेंगे तो हमारा ये 21 आएगा into 6 divided by 12 10.5 हाँ कितना 10.5 तो वो 1.05 ले सकते हैं यानी 1 घंटा और हाँ 5 मिनट 1.05 ले सकते हैं उसको हाँ, तो इसको हम 6 ही आगे मानेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 60 6 के हाउसेस बजाय उसको आगे 65 आता था अपना वो that would have been 65 so it would have been 21:44 21:45 होता था 3 नहीं नहीं मिनट मेरा हाँ मेरा कहने का मतलब है कि देखिए जामा प्लेनेट मूव कर रहा है वो वाला ट्रांजिट वाला तो वही फिक्स है ये कि इधर जा जामा रहा है प्लेनेट कितने हाउसेस आगे जाएगा देखिए तो ये 7 और 8 हो जाएगा फिर हो जाएगा 8 में जाएगा ना फिर वो यहाँ है नहीं 2 नहीं इसको तो बैठा ही 3 बैठा है 4 1 2 5 3 6 4 5 7 8 6 हाउसेस क्रॉस करने हैं 7वें में मिल जाएगा उसको नहीं नहीं 8 में तो है ना कैसा हो गया 8वें See, ये 1 है ये 2 3 4 5 6 नहीं नहीं उसको 7 वन नहीं मानेंगे उसको वन नहीं मानेंगे हम नहीं वहां से उसके आगे कितने क्रॉस करने हैं वहां तो वो है ही है वो अभी 1 2 3 4 5 6 क्रॉस करके 7वें में जाना है उसको I mean, if you consider this 21 as 1 then it will be 7 but वो फिर वो that is some other technique होगी वो मेरे को नहीं मालूम हाँ हाँ क्योंकि ऐसा लिया गया है ना ये 21 ऐसे ही लिया गया है मेरे ख्याल से पूरा वो 24 घंटे नहीं लगा रहा है उसको क्रॉस करने में मून नहीं ये वो 21 घंटे ही 21 लगा रहा 21 का लॉजिक मुझे मालूम नहीं इसलिए ये मेरा 21 का ये मेरा बराबर ही नहीं आ रहा है कभी भी आई एम जस्ट टेकिंग व्हाट आई एम गेटिंग लेट मी नहीं, शेयर उसमें देयर द इज नो हां नो वो लॉजिक तो नहीं है let me do one thing let me share the second case जो आज सुबह का ही था है वहां पर मे बी दैट एनालिसिस माइट बी मनीष जी या हां हां मेरा इसमें एक क्वेरी है हम्म, जिसमें ये जो मुझे यहाँ पे 8 नंबर का लिखा है यहाँ पे लाइक इसको अगर हम स्कॉर्पियो का मान के चलेंगे तो इसकी रेज हाफ हो जाती है डेबिलिटेशन में ओके तो 10.5 उसकी रेज अगर बचती है तो हाँ, अगर हाँ, उसको हाँ। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन इट कुड बी 63 मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 so 8 into 20 on your saying 8 into 10.5 हाँ मुझे 21 divided by 2 ना 8 into 21 divided by 2 so it comes to 84 then नहीं अगर यहाँ से जामा मून से ट्रांजिट मून को लेंगे तो या गामा ट्रांजिट मून मून से से यहाँ जामा तक मून अगर को जाना है तो ये 1 हो गया हाँ 2 हो गया 3 4 5 6 7 और 8 हो गया ना so it will हाँ be यहाँ से 8 8 हो गया हाँ 8 into 21 that is 168 divided by 2 because you are saying it is half so 84 हो गया हाफ तो तो अगर 80 if we take it if we multiply it by 6 then 6 कैसे उल्टे जाके सर हाँ 1 2 3 4 जैसे मैंने लिया था वो जी तो जी जी हाँ तो वो 7 एक then it मिनट would be 63 6 multiplied by 21 divided by 2 will be 63
हाँ दैट इज आल्सो करेक्ट, वो भी आ गया, बराबर है, सेम आ गया। 62 मेरे को आया था, आपको 63 आ रहा है। क्योंकि डेबिलिटेशन में करेक्ट उसका जो करेक्ट, रेज है ये प्लेनेट का वो डेबिलिटेड, हाफ रह जाएगा ना, ये डेबिलिटेड। हाँ अब वो हाफ Yeah. रेज रह जाएगा उसका। डेबिलिटेशन यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दिया, दैट इज व्हाट आई एम सरप्राइज्ड, बिकॉज़ इट शुड हैव शोन हियर। व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट, 8000 में डेबिलिटेटेड है, पर इधर बट इट्स नॉट एक्चुअली 8th हाउस, इट इज द लिब्रा साइन। नहीं, Yeah. 8 राशि, लाया ascendant, 8 राशि, 8 हाउस में। but it is 8th राशि where Udyam, from where Udyam is there. नहीं, हाँ Udyam is in अच्छा, हाँ Pisces ना, दैट we इज are व्हाई इट इज taking हाँ, that ना, या that's why it's not shown there. हाँ करेक्ट करेक्ट, बराबर। लॉजिक लॉजिक क्या है, जहां पर जिस साइन में उद्यम से मून पड़ रहा है वो डेबिलिटेशन या एक्सॉल्टेड नहीं, लेना राशि है क्या? राशि देखना चाहिए, राशि। तो फिर ये तो नहीं 8 होगी ना। 8th राशि में मून डेबिलिटेटेड होता है, नॉट 8th हाउस। पर ये 8 8th राशि हाँ, नहीं है, 8 राशि यहाँ पर आती है, 8th राशि वहां पे होगी guys. यहाँ पर, तो यहाँ पर वो डेबिलिटेटेड नहीं है। 9th हाउस में तो इनफैक्ट नहीं है। मून इज स्ट्रांग एक्चुअली। 9th हाउस, 9th राशि में मून एंड सन आर वेरी स्ट्रांग, जुपिटर का घर है ना 9th राशि। एक हाँ, मिनट, एक सॉरी, moon- एक मिनट, दिस थिंग इज गोइंग टू शट इन अनदर 5 minutes, so again log in back if you Okay. can continue। ओके, हाँ, क्या बोल रहे थे आप, रचना जी बोलिए, what were you saying? ये इसका हाफ नहीं लेंगे यहाँ पर मून की रेस को? नहीं, what he is saying is, see, we are experimenting, what बलजीत जी saying is basically इसको अगर कालपुरुष के हिसाब से 8वें राशि पकड़ लो, ओके, तो वैसे होगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग बलवीर जी, आई थिंक दैट इज लिटिल चांस ले रहे अपन वो तो फिर हिट एंड ट्रायल हो गया ना। हाँ, वो बिकॉज वो इट इज नॉट गिविंग, बिकॉज दिस फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव जस्ट एक्सपेरिमेंटेड एंड इट केम, मुझे इट इज नॉट ही सम। शुड गो द लॉजिक ओनली। हाँ देखते हैं ना, अब अभी नेक्स्ट केस बताओ क्या, 7 मिनट है, लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट केस, फटफट देखते हैं, देन वी कैन कम। ये आज सुबह का ही है, वी कैन कम बैक टू द डिस्कशन अगेन। अभी आज सुबह का ही था, वन पर्सन वाज सपोज्ड टू कम, सो एट 8:57, तो कैलकुलेशन के लिए 9 पकड़ बचे, तो 9 o'clock he was supposed to reach at 9 o'clock, 9:15 ऐसे था, ओके। सो ये मैंने किया, तो how I did was another thing which I saw was why did I say he was going to come late? उदयम का लॉर्ड मर्क्यूरी है, सैटर्न कहाँ पर है? सैटर्न, ये मार्स है ना, सैटर्न यहाँ पर है, हाँ, तो ओके ठीक है। So what I've done, same calculation I've done here. Let me zoom into this. Just one minute. Okay. Now just see the same calculation over here. Transit moon minus JAMA moon is 116. 116 divided by 21 is 5.52. Again, like I said, 0.52 of 21 is 10.92. I have said let it be 11. So all this put together, this 5.52 becomes 5.11 when converted. Okay, so ये एक अपने को ध्यान में रखना। Now just see this. I'll tell you what the thing is. I think this is the secret of it all. अभी जामा मून से ये जामा जो भी है, okay, is 5 apart. तो यहाँ से यहाँ सेम, ऑलमोस्ट सेम ही अपने केस से 1 2 3 4 5, बराबर। बोथ मून इन द सैटर्न नक्षत्र, ये अभी इसमें नहीं आएगा, वो एक्सेप्टेड हो गए। बोथ द मून्स, ये जो मून है और ये जो मून है, ये दोनों ही सैटर्न के नक्षत्र में है। दैट इज व्हाई, हाँ, दैट्स व्हाई इट सेड दैट इट इज गेटिंग डिलेड, बिकॉज़ सैटर्न का कारक इज डिले, बराबर। Okay, now the calculation which I done was moon in Udayam is fast, but moon is in Saturn Rashi, so it is going to be delayed. Now option 1 what I done was, okay, yeah, forget it, let me go to the calculation, because he came in 52 minutes, 1 hour 9 minutes में he came, okay, this was the end result. अभी ये दोनों देखो आप, फर्स्ट इसमें अगर देखो ना, तो difference is 5 राशि, 5 into 21 is 105, is 1 hour 5 minutes later. Okay, second option जो है कि 5.52 जो आ रहा है, ये जो
इधर गया 5.52, ये जो 5.52 आया था हम्म उसको 5 राशि और 52 मिनट्स मैंने पकड़ लिया था। हम्म तो ये ब्लू में मैंने जो किया है ना, दैट इज एक्चुअली द कैलकुलेशन व्हिच इज कमिंग टू कि उदयम टू ट्रांजिट मून इक्वल टू 1। Actually, I think I should. This will become complicated. There is one more case which we had done today. वो timing का किया था, वो कौन सा किया था? इसमें टाइम क्या रहा फिर, क्या टाइम रहा, कितने बजे पहुंचे? He came at this time 10:06, 1 hour 9 और minutes, and I had got Delhi. 1 hour. I had got 1 hour 5 minutes. Or the other Okay. option was 52 minutes. नहीं, कितने बजे, नहीं तो आपका डिफरेंस कितना रह गया फिर उसमें? 4 minutes. See, the 4 time of this thing was 8:57. तो 9 पकड़ लो. ओके, And he came at 10:06 म्हणजे 1 घंटा 6 मिनट हुआ ना. बट 6 मिनट 3 नहीं, मिनट। बिकॉज ये 3 मिनट यहाँ पर आ गया, इसलिए एक घंटा 9 मिनट के बाद में आया। एंड आई हैड कैलकुलेटेड 1 घंटा 5 मिनट। अभी ये बंद हो जाएगा ना, उसके बाद में आई थिंक आई विल टेक अप प्रसन्नजीत का केस जो था ना, उस पे वो टाइमिंग ज्यादा एक्यूरेट आ रहा था। देयर आई हैव रिटन इट बेटर। इसमें आपको मेरे को एक्सप्लेन करने को कठिन होगा। इसमें भी मैं बता रहा हूँ मनीष जी, करके हाँ, देखो। इसमें भी हाँ, से आप काउंटिंग करो, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 हाउसेस क्रॉस करने हैं। 21 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 12 करो, 1.2 आएगा, मतलब आवर्स। तो लगभग मतलब वो इतना क्लोज ही पहुंच रहे हो, बहुत है। इतना क्लोज 12.25 आ रहा है, पर अभी ये 8वें राशि में है, तो यहाँ पर मून डेबिलिटेटेड है। ये देखो डेबिलिटेड मून है। सो लाइक व्हाट बनवीर जी हैड सेड, इसको हाफ करना पड़ेगा, बरोबर, डिवाइडेड बाय 2, सो दैट कम्स टू 6.125. 6.125 इज 61 minutes. 61 minutes is like saying 1 hour 2-3 1 minutes, minute. which is very close to this. आपने जो किया ना शर्मा जी, वो सेम थिंग यू हैव टेकन फ्रॉम हियर। हाउ मच यू टुक? नहीं, मैं तीसरा तरीका ले रहा हूँ, केवल हाउसेस काउंट कर रहा हूँ। मतलब 12 घर चलने में हम 21 काउंट कर रहे हैं। नहीं, आपने जो 7 उसका 8 9 पकड़ा होगा ना। सो 9 इफ यू से, सो नहीं, 9। मैं यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, मैं उसके हाँ। आगे वाले घर से, कितने आगे आगे घर वाले- लेफ्ट है। अच्छा, यहाँ से ले रहे हाउ हो। मेनी सो हाउसेस अच्छा, आर लेफ्ट, उसको सो count 7 और हाँ। 8 ऐसे दिया आपने, बरोबर ना? नहीं 7 का तो 8 में मिल ही गया, उसको हाँ। तो बाउंड्री पे आ गया, वो खत्म। हाँ, तो 7 क्रॉसेस करने, क्रॉस कितने करने? 7 हाउसेस क्रॉस करने हैं उसको। तो जहाँ पर ट्रांजिट मून और जामा मून है ना, उन हाउसेस को छोड़ रहे हैं, बीच के अच्छा, हाउसेस यहाँ से यहाँ ही पकड़ कितने लिया ऐसे। क्रॉस करने हैं उसको? बस तो अच्छा, 7 हो गया, तो 21 so it मल्टीप्लाइड has बाय to cross 7 this, it डिवाइडेड has बाय to cross this, and it has to cross this ये- ऐसे। तो यहाँ से है ना That's it. 7, तो 7 अगर पकड़ लो, 7 into 21 is equal so much divided by 2, 73 minutes आ गए। So 70 12 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा आपका कितना? आधा करो। 6.125 अप्रोक्सीमेटली 1.2 आवर्स। ये नहीं, 1 घंटा 6.125 है ना। हम्म? See, 7 into 21 is 147 divided by 2 करना is 73. मनीष हाँ, 21 नहीं करना ना, मून की रेज हाफ करो ना। नहीं 21 अगेन डिवाइड बाय 2 किया मैंने। अच्छा, Same ठीक। है। So 7 Okay. into 21 is equal to 147 divided by 2 is 73.5 divided by 12. 12 आपने क्यों किया? तो 12 हाउसेस इसके लिए ऐसे। 12 हाउसेस नहीं, मैं हाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरा लेके चल रहा हूँ। हाउ मेनी उसको क्रॉस करने हैं, मैं उसको नहीं लेके चल रहा हूँ कि तो 7 into Definition. 21 आप divided by 7 ही 2. लेके चलो मनीष जी, आप हाँ। 7 लेके चलो, लेकिन मून की रेस हाफ कर दो 10.5, फिर देखो। तो 7 into हाँ। 21 is 147 divided by 2 is 73.5. So